Dear student, today we are going to discuss staining. Actually, staining is dyeing or coloring of the plant or animal tissues or cells. Dyeing or coloring of cells or tissues, that is known as staining. Generally, in case of plant and animal sciences, the internal structure of cell or tissues can be studied after staining. After staining. So, literally, staining means it is a coloring of the cells or coloring or dyeing of the tissues. So, what is the purpose of staining? For the clear differentiation of arrangement of the cells of different types of tissues, or we can study the internal structure of cells after staining. So here we say that after staining, after dyeing, or after coloring, we can differentiate it, the different types of cells, different types of tissues very clearly. Because in plant cells, there are different types of cells. For example, some cells are parenchymatous cells, some cells are pleurenchymatous cells, and some cells are having chloroplast. So there are different types of cells. As you have studied in first year, tissue or cells, parenchymatous cells, pleurenchymatous cells, cholenchymatous cells, or whether it may be. So here, the main purpose of the staining is to differentiate the cells and the tissues, the cells and the tissues, the cells and the tissues. So see here, on the basis of the chemical structure of the cells observe particular stain and shows their picture very clearly. For example, in case of fungi, the two very famous or very known stains, one is cotton willow and second is lactophenol. They are used to see the internal structure of fungal cell or mycelium or fungal spores when they are colorless, or we can say that they are when they are white, when they are white. So lactophenol and cotton willow, these are the two stains. These are the stains. How we can verify stains? We will see later. But here you remember that lactophenol and cotton willow, these are the two stains. It is very famous and it is very useful. It is very useful to differentiate the fungal cell from the other cell, because the fungal cell wall is made up of chitin or chitin. This is the chemical components, chitin or chitins. This is the chemical components, chitin or chitin. So it absorbs the cotton willow or lactophenol. It absorbs cotton willow or lactophenol. Next thing, see here how we can see the, or what is the procedure, how we can observe the mycelial or fungal mycelial cell or fungal spores. See here, take a drop of absolute alcohol on cavity slide. Actually, the drop of alcohol is taken on cavity slide. Cavity slide means a slide in the center there is a some hole-like structure. That is the cavity slide, and place the thread of fungus or spores on the slide.
and touch with a drop of alcohol. The alcohol kills the fungus and become hard. So here the fungal cell or mycelium become hard and it kills the fungus, and it is very easy to stain. And take a small drop of respective strain, whether it will be lactophenol or cotton willow, on a clean slide and transfer the thread, fungal hyphae or spores to strain for 2 to 3 minutes and the amount in a drop of lactophenol or cotton. So as I have told you, in first step you take the cavity slide, place the fungal thread on cavity slide, and a small drop of alcohol is poured on that fungal spores or mycelium part or hyphae. Due to that, it becomes hard and it kills the fungus or spores. Actually, the dehydration of the fungal spores and mycelium takes place. And after that, transfer this material on a slide which is having cotton willow or lactophenol, and then observe this slide under microscope. You will find how is the structure of mycelial cell and how is the structure of spores very easily. So this technique is very important in case of mycology, that is the study of fungi, because in fungi we can take the measurements of the fungal spores, measurements of mycelial length, how is the structure of mycelium. So it is very important. So here the cotton willow and lactophenol, these are the two very important stains which are used in the identification or differentiation of fungal cells and fungal cells. Well, generally, these two stains they are used when the mycelium is colorless. In the mycelium or spores are colorless. But sometimes in case of fungi, the spores are colored. The spores are colored. So when the spores are colored, it is not necessary to use the cotton willow or lactophenol. Okay, so the various stains that are used to differentiate the tissue in the organ. Most of the genera of fungi may have hyaline threads. Hyaline means it is colorless or hyphae. Hence, the cotton willow is used. The cotton willow is an acidic stain which is easily observed by the cellulose present in the cell wall. Hence, the cell wall could be seen distinctly. So, this is about the cotton willow and lactophenol. Again, if suppose you have studied in plant pathology, the infected leaf section, infected leaf section. Because generally, after getting the section, infected section, which is the infection is caused by fungi, okay, how we can see the fungal hyphae or spores that are present inside the leaf, infected leaf of any plant which is affected by the fungus. So here, when the transfer section of the infected leaf, the stem or root is stained with cotton willow, it becomes easy to observe the site of location of the fungal parasite in the host tissue, because the cotton willow stain is observed only in the fungal element. So after getting the section of the infected parts, you pour a drop of lactophenol, cotton willow, then you can easily see the fungal spores that are present inside the infected leaf. So this is about the cotton willow and lactophenol. So how we actually how we can prepare the cotton willow? See here how we can prepare. It is stain cotton willow. How we can prepare the cotton willow? Cotton willow is a stain used to color the fungi and nematodes. Generally, in dyeing or coloring of the nematodes, cotton willow is also used. In cotton willow, 1% aqueous solution is mixed with 1% aqueous solution is mixed with
crystal or phenol lactic acid and glycerin is added. So this is the procedure for preparation of lactophenol. You can prepare in laboratory as you have going to become a graduate. You can prepare the lactophenol. So you remember that how you can prepare the lactophenol. Again, I will show you simply. You take 5 ml of cotton willow, 1% aqueous solution, and add 20 grams phenol crystal and add 20 gram lactic acid and add 5 gram glycerin. It becomes cotton willow. Again, see here, here 5 ml cotton willow, 20 gram phenol crystal, 20 gram lactic acid, and 40 gram glycerin. So this composition forms the cotton willow. So this is very famous and common strain that is used to see the fungal cells or fungal tissues. Next thing is the lactophenol. Actually, this lactophenol is temporary mountain. The pure alcohol crystals are liquefied by gentle heat on water bath. After this, lactic acid, glycerol, and distilled water is added. So, in preparation of lactophenol, 20 ml of phenol, 20 ml of lactic acid, 40 ml of glycerol, and 20 ml of distilled water is mixed. After that, it becomes the lactophenol. Okay, so, this cotton willow and lactophenol, these are very useful in the identification or differentiation of fungal cell. Okay. So if you have any doubt in this lactophenol or cotton willow or staining which are used to differentiate the fungal cells, you can ask the questions. Arisha, सुने आ रहा है ना? नो सर. हेलो, हाँ सर, समझ में आ गया सर. हाँ, बुशरा, सर समझ में आ रहा है? यस सर. हाँ, आप देखो याद रखो. समझ में आ गया. आ गया ना समझ में? ठीक है, आप देखो, आप याद रखिएगा लैक्टोफिनॉल कैसा बनाते हैं, कॉटन विलो कैसा बनाते हैं, बराबर है? लैक्टोफिनॉल कैसा बनाते हैं, कॉटन विलो कैसे बनाते हैं, दो चीजें याद रखो. और ये कई के वास्ते यूज होता है, फंगल सेल्स. अब जनरली क्या करते हैं अपन मालूम है क्या? स्टेनिंग बोलते हो कलरिंग, और डाइंग, डाइंग बोलते हैं DYE. डाई बोले तो डाई किसको बोलते हैं? DYE. आ रही ना आवाज? हेलो. यस सर. हाँ, तो डाई किसको बोलेंगे? DYE. डाई बोलते तो कलर को बोलते हैं. हेयर डाई करते ना, हेयर डाई. हाँ, या फिर DIE बोले तो वो डाई का मतलब क्या होता है? नहीं मालूम. खैर ठीक है, तो याद रखो स्टेनिंग और डाइंग और कलरिंग, ये समझ में आएगा ना आपके यहाँ तक. और नेक्स्ट थिंग देखो, ग्राम स्टेनिंग. ये सुना हुआ है क्या आपने, ग्राम स्टेनिंग? हेलो, हेलो. अच्छा, ग्राम स्टेनिंग सुना हुआ है क्या आपने? हाँ सुना है सर. क्या क्या इसके यूज नहीं याद है सर, भूल गए. अच्छा ठीक है, तो याद रखो आप. फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, whether it is gram positive or gram negative, for that purpose only the gram staining is used. आया समझ में? हाँ ओके सर. हाँ अब देखो, फर्स्ट द ग्राम स्टेनिंग इज डेवलप्ड बाय हंस क्रिस्टियन ग्राम. याद रखो, इसमें क्वेश्चन आया था. देखो समझ में आ रहा है? सबसे पहले ये टेक्निक किसने डेवलप किया? हंस क्रिस्टियन ग्राम. लिख ले, तो लिख ले, क्वेश्चन आया था. इसमें क्वेश्चन आया था, लिख के ले लो, हंस क्रिस्टियन ग्राम. वही लिखता, स्क्रीन दिख रही ना आपको? यस. हंस नाम दिख रहा है ना? यस सर. क्या है?
देखो हंस क्रिस्टियन ग्राम फर्स्ट डेवलप द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक इन 1853। 1853। तो अब इसमें क्वेश्चन आया था 1853, ये जो है ना, हु डेवलप द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक्स। अब जैसे नाम ही इसका ग्राम, हाँ, नहीं तो वादवा स्टेन क्या होता है, हंस क्रिस्टियन ग्राम। अब इसकी जगह तो कौन से नाम दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, रमेश ग्राम, हाँ, अगर समझो दूसरा ग्राम देंगे तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, बराबर है। तो सिर्फ Yes, sir. हाँ, यू रिमेंबर दैट हंस क्रिस्टियन ग्राम in 1853 he developed the gram staining techniques for identification of bacteria, whether it is a gram positive or gram negative bacteria, gram positive or gram negative bacteria. So you remember these things today. Here we will stop and we will see in next period. अब देखो याद रखो क्या क्या करने का है अपने को, समझो फंगल की और फंगाई की स्टेनिंग करने का तो क्या यूज करेंगे अपन, कॉटन विली और लैक्टोफेनॉल, बराबर है। और अगर समझो बैक्टीरिया को स्टेन करना है तो क्या यूज करेंगे अपन, ग्राम स्टेनिंग। अब ग्राम स्टेनिंग कैसे यूज करते हैं, उसका टेक्निकल प्रोसीजर अपन नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, ठीक है। सिर्फ आज इतना याद रखो ग्राम स्टेनिंग किसको बोलते हैं और कई के वास्ते यूज होता है वो, और इसको कौन डिस्कवर किया, ठीक है। Yes, sir. हाँ, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं इसमें। No, sir. हाँ? ठीक है, फिर स्टॉप करना है अभी। हेलो, हाँ, yes, sir. अब देखो और क्या करो, रिकॉर्ड को तैयार करके ले लो। Yes, sir. Sir, कॉलेज से लेना है क्या रिकॉर्ड बुक? कॉलेज से अगर मिल गए तो ले लो, किसी को भेज के, या नहीं अगर मिल रही समझो तो बायोलॉजी की रिकॉर्ड में लिख के ले लो। अच्छा, ठीक है सर। अब देखो ये चीजें याद रखो, आप अगर आप एमएससी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं तो आपको यूज आता है कॉटन विलियो लैक्टोफेनॉल, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। जो लोग माइक्रो के हैं उनको मालूम होगा ग्राम स्टेनिंग क्या है, हाँ, माइक्रो में ये यूज होता है। अपन ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में यूज किया हुआ है कॉटन विलियो और लैक्टोफेनॉल, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, आपने फर्स्ट ईयर में परमानेंट स्लाइड बनाए थे, याद है क्या, रफीक सर ने बनाने को लगाए थे मोनोकॉट डाइकॉट की। रफीक सर का नहीं करे थे सर हमने प्रैक्टिस। नहीं करेगा, अच्छा वो टेक्निक है। तब अच्छा आपने 11 12 में स्लाइड देखी ना, आपने स्लाइड बताते हाँ, देख 11 12 में परमानेंट स्लाइड बताते, हाँ, यस सर। मोनोकॉट डाइकॉट की, हाँ हाँ, ठीक है जना आपने। हाँ हाँ सर, मोनोकॉट डाइकॉट याद होगा आपको, हाँ, या समझो चार्ट लगा हुआ है, प्लांट सेल एनिमल सेल। तो आपको दो कलर नजर आते हैं उसको, एक तो लाल नजर आएगा, एक तो हरा नजर आएगा चार्ट में, स्लाइड में देखे होंगे आपने, परमानेंट स्लाइड, हाँ, दैट इज स्टेनिंग, एक्चुअली दैट इज स्टेनिंग, इसको बोलेंगे स्टेनिंग, हाँ, इसको आप बोलेंगे स्टेनिंग, हाँ, ये याद रखो। अब जो लोग समझो फंगस में पीएचडी कर रहे हैं, जो लोग बैक्टीरिया में पीएचडी कर रहे हैं, ये चीजें वहाँ काम आते हैं, ग्राम स्टेनिंग, लैक्टोफेनॉल, कॉटन विलियो, ठीक है। हाँ, अब स्टॉप करिए, नेक्स्ट टाइम देखिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लाह।